Now this is the question number 49 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, in order to answer this one, first of all, let's do the line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो लेट्स लाइन नंबर वन क्या है आपका, एक लिस्ट है, इसके अंदर क्या वैल्यू है 10 20, देन L1 है आपकी 30 40, देन L2 है आपकी 50 60। और लाइन नंबर 4 क्या कर रही है आपकी, L के अंदर क्या अपेंड कर रहे हो आप L1, तो क्या कर रहे हो आप 10 20, सिंस यू आर अपेंडिंग तो क्या होगा आपका L1 वुड बी एडेड एज एन सिंगल एलिमेंट। तो L1 की वैल्यू क्या है आपकी 30 एंड 40, तो 30 एंड 40 विल बी एडेड एज ए सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, ये तो क्या बन गई आपकी अब ये लिस्ट के अंदर लिस्ट। नाउ इट इज ऑन द लाइन नंबर 5, लिस्ट को क्या कर रहे हो आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो एक्सटेंड के केस में क्या होगा आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द L2 विल बी एडेड एज एन एलिमेंट ऑफ द L। अपेंड के केस में क्या होता है एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड होता है, और एक्सटेंड के केस में क्या होता है आपका सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल करके एलिमेंट ऐड होते हैं। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ L। If you wish, you can run this one on the ID. You will see we will get the same output as the we deduced. So for this one, option number D is the correct one. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. I want you to answer this one in the comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.